try to understand the market opportunities which are available during this era where there is a mixture of industry 4.0 and 5.0. So a quick recap. So a quick recap. So the recap is just about industry 4.0, 5.0 and enhanced emerging market needs. So as you are well aware that what are the difference between 4.0 and 5.0, I am not going much into it. So this is a small definition which says that 4.0 is a fusion of digital, physical and biological world, right? And it is prominent through technologies like AI, Internet of Things, robotics, cloud computing, analytics, correct? And the objective is to create smart processes and increase efficiency. These are the two broad objectives of industry 4.0. ये तो आपको clear है ना? Moving to 5.0, again here the keyword is human-centric solutions. The keyword is human-centric solutions. So we talk about cohorts emphasizing on the social well-being. Correct. Here the impact is on enhancing the creativity and problem solving by combining both the intelligence, human intelligence and artificial intelligence. Correct. So the question is, how do these technology create new customer expectations? What are the customer expectations in this current disruptive world? To get the work done more fast. More faster, okay. Or more easy accessibility. Easy accessibility of Anything you want, goods and services. anything you want. Okay. So for example, Personalized or customization. Personalize the customization. But not at the cost of jobs of humans. But this is bound to happen this time. This is bound to happen. So there are many examples where AI has reduced the manpower because of the so-called machine learning, deep learning, back-end algorithms. Machines are smart enough to understand human instructions and respond accordingly. Doesn't require Doesn't require trainings, special trainings like if you are Yes. employing a staff, you have to tell them, yes, no, that this is. तो छुट्टी भी नहीं मांगते. But machines accept it. And over the period of time, based on your instructions, they will adapt themselves to be a better version. Correct? The best example is in your hands, mobile phones. अभी आप YouTube open करेंगे या Amazon करेंगे, you all will get different home pages. Why? Because that Amazon का home page is adapted itself according to your browsing history. So these are enhanced access to information. So we say that we are in the era of information where we can get any information at a click of a button. So because of this, customers require instant gratification. They want everything quick. Correct? Then there is a seamless experience. So earlier we used to say about retail outlets. Then it was an e-commerce. Then it became omni-channel. What is omni-channel? It is a seamless experience. So if today you want to buy something, if you are suppose browsing Shoppers Stop on your mobile phone, you will get the same experience, the same experience as you will be getting in the store. Vis-a-vis, if you are searching for a brand, for example, and Anita Dogri designs on your mobile phone on Shoppers Stop on Anita Dogri's branded store, you will get same experience. You are watching Netflix on your mobile phone, you are watching Netflix on a bigger screen. You will get same connectivity where you have left on your mobile phone, you will get same in your televisions. So this is seamless experience that customers are looking for. Right? And then customized interaction. Everybody wants a customized interaction. This Gen Z, Gen Alpha are very different. They are not same as we are. They need a specialized attention. They need tailored product. They need something which make them feel more refined, different. और यही चैलेंज आता है जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट क्लास में आ रहा है 2000 के बाद का आ रहा है, जब उसको हम पढ़ा रहे हैं उसको नहीं चैलेंज आ रहा है. पहले हम कोर्स बनाते थे पूरे 60 क्लासेस 60 स्टूडेंट्स को कंप्लीट करते हुए हम उसे कस्टमाइज करते हैं. तभी आप देखेंगे
जितने भी नए यूनिवर्सिटीज आ रहे हैं, दे आर ऑफरिंग मल्टीपल कोर्सेज इन एनी स्पेशलाइजेशन एंड स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर इट। उसको बड़ा अच्छा नाम दिया उन्होंने, ओपन इलेक्टिव्स, ओपन स्पेशलाइजेशन, value added courses, correct? Why? Because these are some things which is more demand. So these are the shifts in consumer behavior, expectation of personalization we have discussed, demand for instant gratification. आप सबके मोबाइल में स्विगी, जोमेटो, जेप्टो होगा, ठीक है, ब्लिंकिट होगा, ग्रोफर चेंज टू ब्लिंकिट, वो क्या कर रहा है, वो इंस्टेंट आपको देगा। देयर वाज टाइम जब हम बिग बास्केट पे पहले सब्जी एंड वेजिटेबल्स ऑर्डर करते थे तो 2 दिन में हमारे पास आते थे, 2 दिन में आते थे। देन केम मिल्क बास्केट। मिल्क बास्केट में रात 11 बजे तक यू हैव टू जस्ट क्लिक, आपको कार्ट पे भी नहीं जाना है, आपको क्लिक करना है, वो कार्ट पे अपने आप जाएगा। मोमेंट इट इज इन द कार्ट, सुबह 5:30 इट विल बी एट योर डोर, दे विल नॉट इवन रिंग द डोर बेल। 3 साल पहले प्री कोविड ज़्यादा था, ठीक है। अब क्या है, आपने किया एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग एंजाइटी, अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हुआ, अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हुआ, है ना। The moment you decide कि मुझे ये खाना है, कोई चीज काम है, आप ऑर्डर करते हैं and you want it instant. So even 9 minutes, 18 minutes, 8 minutes जो डिलीवरी टाइम है ब्लिंकिट का, जेप्टो का, हमें वो भी बहुत ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो जब हमें ज्यादा लग रहा है, we are Zen, Z, Zen, Y, तो जो Zen अल्फा है उसके लिए 8 मिनट का काम, correct? So lot of things gonna change and they are changing, you are experiencing, right? Now, the important thing is how we will identify new opportunities in this current disruptive world. What we need to do, how we need to adapt, both as a human being, as an educator. So, anybody from industry or everybody is educator? Some teachers हैं, आप industry से कहाँ से हैं? Sir, I'm currently advocating for the profession. L&D profession किसके साथ? After the school consulting. तो आप तो बहुत सारे ज़ेन अल्फा वालों को ट्रेन करते हो, या अपने सभी को रेंज, ऑल रेंज, हाँ, और फुल। उसमें बेसिकली आई एम इनटू कंटेंट डिजाइन। कंटेंट डिजाइन तो आप यूज करते हैं किसी एआई का? यस। किसका? कैनवा और ग्राफी, एक वीडियो। वो कंटेंट कहाँ से बनाते हैं? ये तो आप डिजाइन कर रहे हैं कंटेंट, कंटेंट क्रिएट चैट जीपीटी से, कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म से जो अवेलेबल है वहाँ से, केस स्टडीज अपने इंटरनेट पर ऐसे अवेलेबल होता है। उससे बनाते हैं। Any difficulty you face while using ChatGPT? Not yet. ऐसा है bit difficult sometimes क्योंकि उसके पास recent data नहीं, my profession is bit different. You are into? I am into legal and HR consultancy, but I am more into corporate legal. Okay. तो उसमें कि अभी जैसे BMS का आ गया, ChatGPT it's not having that much information of BMS. तो जब मैं डालूंगी तो it gives the answers of the IPC, and ये इंडियन पीनल कोड का देता है इंस्टेड ऑफ भारतीय BMS. हिंदी वाले में थोड़ा सा दिक्कत होती है, and many times it gives wrong answer also. At times. तो आपने कभी वो यूज किया चैट PDF या यूमाटा? ग्रामरली क्या है? ग्रामरली इज फॉर ग्रामर। यूमाटा और चैट PDF में ना नेट से कंटेंट डाउनलोड करके सारा PDF में कन्वर्ट कर लीजिए, उसे अपलोड कर दीजिए, देन यू कैन चैट विद योर PDFs। हाँ वो किया है इन ChatGPT होगी, I upload it and then use it, तो वो फिर उसके बाद आंसर सही देता है। पेड वर्जन किया है? अनपेड फी है। ठीक है, पेड भी ट्राई करते हैं। If you want to see the dishes, I will show you. I have a paid one. Okay. So now moving to identifying new market opportunities. So अभी तक आपने 4 दिन जितना था ना, what according to you are the new opportunities where companies can look and we as educators can look for how we can capitalize it. If we want to improve our understanding